हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल बायोरिल्म। इस वीडियो में हम लोग एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, और जिसे कि कार्निवोरस प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है। प्लांट्स हु कैन बी नॉन वेजिटेरियन मीन्स plant which eats non-veg. Sounds strange, right now? So these plants are such which eats the insects. जो प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाते हैं, इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिशन को सेटिस्फाई करते हैं, उनको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, और इन जनरल टर्म इसे हम कहते हैं कार्निवोरस प्लांट्स। सो ऐसे भी प्लांट्स नेचर में एग्जिस्ट है। वी जनरली नो दैट प्लांट्स टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। ओके, सॉइल मतलब कि जमीन से वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जिसमें कि पोटेशियम, नाइट्रोजन, देन योर phosphorus is there. So these nutrition is taken by the plants from the soil, but there are certain specialized plants which take the nutrition from the insects. So therefore these plants are called as insectivorous plants. So what are the characteristics features of these insectivorous plants? These insectivorous plants or carnivorous plants, they generally grow in the damp or the moist habitat or moist soil, or where the humidity is very high and moist habitat. At that place generally these insectivorous plants are found. Then they are found in नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, मतलब कि जिस सॉइल में नाइट्रोजन कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, जहां पर स्कैरसिटी होती है और डेफिशिएंसी होती है नाइट्रोजन की, तो इन दैट केस दैट deficiency of nitrogen from the soil is fulfilled by that particular plant by engulfing, by digesting that insect which comes in its contact. So how they are going to get the insects for their as a food? So they are having a lot of different traps, okay, through which some plants are having hairy edges, where when the insects come over there, it gets trapped inside that, or it gets stick to that hair and trap inside. Some are having like opening like this and some lid like this. So once insect gets entered into the that uh, part, the lid gets closed and the insect cannot escape. सो इसी तरह से, और सम प्लांट्स जो होते हैं उनमें कोई टेंटेकल्स लाइक थिंग्स होता है, स्टिकी म्यूसिलाजिनस सब्सटेंस भी कुछ प्लांट्स वहां पर सिक्रेट करते हैं। तो जो इंसेक्ट होता है वो जब उन प्लांट के पास आता है फॉर कलेक्शन ऑफ द नेक्टर और समथिंग एल्स, so at that time that sticky substance, because of that sticky substance the insect gets trapped. Okay, and why the insect come over there in the vicinity of that plants? Because that plants are having certain characteristics. They are having very attractive flowers, they are having some pleasant smell. Okay, odor is very pleasant, and because of that attractiveness or pleasantness or the pleasant odor, the insect come over there and gets trapped. There are a lot of different types, like Venus flytrap is there, then Drosera plant is there, Nepenthes, which is called as pitcher plant. So these plants are there, which are known as these are some of the examples of insectivorous plants or carnivorous plants. So you know, or I don't know you know or not, but it's very interesting that up till now we know that plants only take the nutrients in the form of micro or macronutrients from the soil, but there are certain plants in this nature which is created by the supreme power, which these plants can eat the insects. Okay, the nitrogen content in that insects, because the insect contains nitrogen, that nitrogen content is taken by the plants, and for that they are having certain digestive glands or digestive enzymes also, so that the insect, when it gets trapped inside, it gets digested and the nitrogen is utilized by the plant which is present in that insects.
सो आई थिंक ये एक शॉर्ट वीडियो मैंने इस पर बनाया है जस्ट टू गिव द इंफॉर्मेशन। डिटेल वीडियो हम लोग इसमें जो डिफरेंट प्लांट्स है, जैसे कि मैंने आपसे कहा ड्रोसेरा है, देन नेफेंथिस है, देन उसे की पिक्चर प्लांट कहते हैं, विनस फ्लाईट्रैप है। इस इन दिस प्लांट्स द मैकेनिज्म ऑफ ट्रैपिंग इज वेरी डिफरेंट एंड यूनिक। सो उस बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इस सेशन में जस्ट आई विल गिव यू दिस इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और कार्निवोरस प्लांट्स। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट्स? थैंक यू। इस वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे। डिटेल वीडियो में इसके बाद में मैं आपसे शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर लाइक हो, आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।